इदानीं भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्रस्य निर्देशकः प्रोफेसर ए नटराजु महाभागान् वरणार्थम् अहं विभागीय छात्रान् तथा शिक्षकान् अनुरोधं करोमि। अतः परम असम विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर स्निग्धादास राय महाभागान् वरणार्थम् अहं विभागीय छात्रान् तथा शिक्षकान् अनुरोधं करोमि। इदानीं स्वागतगीतमस्ति। अत्र स्वागतगीतं परिवेशनार्थं संस्कृत विभागस्य तृतीय षाण्मासिकस्य छात्रान् अहम् अनुरोधं करोमि। ततः पूर्वम् अत्र संगोष्ठ्याः संयोजकः तथा असम विश्वविद्यालयस्य अध्यापकः संस्कृत विभागस्य अध्यापकः डॉक्टर गोविंद शर्मा महाभागं वरणार्थम् अहं छात्रान् अनुरोधं करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरा शब्दपुष्पैराचरा श्रीमतामधिरन्। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। प्रीति कुङ्कुमक्षते वै समन्तस्मिन् निधाय। प्रीति कुङ्कुमक्षते वै समन्तस्मिन् निधाय। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरं स्वागतं शुभवन्दनं। यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते। यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते। भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। उपकृता तथा गणकीर्तनम्
उपकृता सतां स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावैर्याहरा स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावैर्याहरा स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं। धन्यवादः। अतीव सुललित कंठेन स्वागत गीतं परिवेशनं कृतवन्तः। सम्प्रति स्वागत भाषणार्थं प्रोफेसर स्निग्धा दास राय महोदया अहं प्रार्थयामि। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नमः विश्वकर्मणे, नमो हिरण्यगर्भाय, नमो अश्विनी कुमार जुगलाय, नमो विश्वेदेवाय, नमः आर्यभट्टाय, भास्कराचार्याय, चोरक सुश्रुत वाग्भटाय, वराह मिहिराय, ब्रह्मगुप्ताय, कनादाय, पतंजलये, नागार्जुनाय च नमो नमः। अद्य बिपिन चंद्र पाल मिलनायतने मंचम अलंकुर्वाणां विद्वद्वरेण्यानां मंच प्रतिपानां च पितानां विदुषां छात्रान् सर्वेषां प्रति हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। देखिए बंटी को गुस्सा आती है मुझे। The Department of Sanskrit, Assam University, Silchar, कनेक्टेड दिखा रहा है आगे on this नहीं आया। international seminar on science and technology in Sanskrit text under the auspices of Indian Knowledge System, Assam University Center, and in collaboration with Sanskrit University, Purvottara Bharata, and with a financial sponsorship of Northeast India Company. I think those they are not present here, but I extend a hearty welcome. I extend the heartiest welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor Rajiv A. Mohan Pant, who remained as our all-time source of inspiration, our friend, our philosopher and guide in every steps of the Department of Sanskrit. Whatever we take up, I extend a very hearty welcome, sir, to this conference. I extend our heartfelt welcome on behalf of the Department of Sanskrit and Assam University to Professor Satyanarayan Chakraborty, retired professor of Rabindra Bharati University, Kolkata, a veteran scholar, our guide source for scholarship. To describe his scholarship, I find that my words are insufficient in the area of Sanskrit. I, on behalf of the Department of Sanskrit, extend
very highly, very highly. I uh, although he is not here, and he is relevant with us online with us. Professor Jambu Grihapatiye Dhamaloko, University of Pune, Sri Lanka. I welcome you in this and praise our country also that being in our country also you are with us. I extremely happy. With whose in collaboration with Sanskrit Bharati and President Professor Dr. Shankar Bhattacharya, Purvottara Bharat. I extend a very hearty welcome to you, sir. It is, although you are not with the department till today, but we believe, firmly believe that you are still a member of the Department of Sanskrit as a university, because we ever remember your contributions within a very short span of 3 years in the building up of the, and in a crucial period, I remember that you enriched our department and enriched ourselves with your good guidance, everything. I welcome you, sir, in this August conference. I welcome Professor A. Natarajan, Director, sir, IKS Assam University Center. He remained with us in organizing this seminar, guided us. I welcome you, sir, on the dais. And I also extend a welcome, hearty welcome, affectionate welcome, and to Dr. Govind Sharma, our pride of the department. He on the wheel of the sitting on this for this conference. The wheel is only in his hand, and we followed in every respect. I welcome you, sir, on the dais in this seminar. I welcome my faculty members of the teaching fraternity, Assam University, non-teaching friends of Assam University, research scholars, students, and all others who are directly or indirectly extended a helping hand to us. I welcome all of you. I wish, with the grace of the God, a grand success of this international conference. This conference, in these conference, many deliberations will come on the science and technology in the Sanskrit texts, and a rereading of these texts is the demand of the day. I hope this seminar will be a grand success. Jayatu Sanskritam, Jayatu Bharatam. Namo Namo. Sabhito Sevatu. धन्यवादः महोदयाः। स्वल्पीयसा कालेन भवतीभिः अत्र स्वागतभाषणम् उपस्थापितं। सम्प्रति अस्ति बीजभाषणम्। अत्र बीजभाषणप्रदानार्थम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति आचार्य सत्यनारायण चक्रवर्ती महाभागाः। अहं महाभागान् अनुरोधं करोमि।
अब वीसी सर थोड़ी देर के लिए उनको एक मीटिंग में जाना है। 15 मिनट के बाद सर फिर से वापस आएंगे। अचानक में सर को भी जाना पड़ रहा है, 15 मिनट के लिए सर का काम है। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। Before we allow me to give one of my books to you, sir. That's the book specialist. So should I start? Yeah, I'll be back in just 10-15 minutes. I understood. I understand everything, sir. Sir, I understand. So, 15. 15. Okay. No problem. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या वीणा वरदंड मंडित करा या शुभ्र वस्त्रावृता ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष Right now, who has left for an urgent meeting? Mr. Vice Chancellor, sir, and all the dignitaries there, from Snigdha ji to Govinda ji. Pratyahare Sarvesham Grahanam. And those who are here, but no less important than persons on the dais. We are on the same boat, brother. I have been requested by Govindji to have a few words on science and technology in Sanskrit texts. And that must be precise within 15 minutes, less than 15 minutes. At the very outset, we may mention that to find out elements of scientific and technological knowledge in Sanskrit text, we should not necessarily confine purely works on science only, since we may find enough materials in the Vedas, in the Upanishads, the two great Mahakavyas, namely the Ramayana and the Mahabharata, the Puranas in particular, and even in the poetic literature also. Puranas are actually storehouse of all types of knowledge, and hundreds of chapters deal with subjects like history, geography, technical science, environment, ecology, medical science, veterinary science, etc., 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 over and above religion and culture. This way or that way, society is reflected in literature as well. How can poets escape the scientific temperament existing in day-to-day life? Hence, a full picture would be available on the analysis of the whole Sanskrit literature itself. Anyway, here in this seminar, I think it would be mainly restricted, I repeat, mainly restricted to purely works on Sanskrit, having science and technology as the main theme. Vedic literature itself reveals that anatomy, embryology, hygiene, etc. were known to Vedic Indians. Ayurveda was looked upon with high regards and importance. The Buddhists were all known for medical
faculty. We know names of Atriya, Jivako, and others. Some prominent works of medicine are Charaka Sangita, Sutra Sangita, Ashtanga Hridaya Sangita, Ashtanga Sangraha, etc., etc. I skip the full list. No doubt, medical science did not depend on modern system of taking much help from X-ray, scanning, etc., that are going on, but experience gathered from observation made it possible to give people minimum basic medical assistance. I remember in this regard that one good PhD thesis was submitted in this university, and that was a study on the plants used in the medicine and their theoretical interface in the medicinal chemistry, which was submitted by one Podumi Roy. I do not know if he is here. Under the supervision of Madam Snigdha and one professor of chemistry department, Satyabhushan Pal. I was very happy. The candidate's pre-submission was on diabetes. This is the need of the day. The departments with varied knowledge should come together, come under one umbrella. The umbrella is called knowledge. A list of authors and works on astronomy consists of Panchasiddhantika, Aryabhatiya, Lalla's works, Bhoj's works, and others. As you can understand, I skip. On astrology, thousands of books are there. Brihad Sangita, Brihad Jatako, Laghu Jatako, Hora Shata Panchashika, Hora Shastra, Jyotishodhara, etc., etc. There are works on Hosti Ayurveda, Hasta Ayurveda, Asha Ayurveda, Asha Vaidyaka, Yogini Manjari, Asha Chikitsa, veterinary science. These are works on veterinary science. The literature on architecture is represented by Vastu Vidya. The Manushalaya Chandrika, the Mayamata, the Yukti Kalpataru, the Samarangana Sutradhara particularly. This book is referred to many works nowadays because of its discussion on aeronautics. And actually so many books on ancient Indian aeronautics is published. For example, I may mention Professor Dilip Kumar Kanjilal, my teacher at Sanskrit College, Calcutta. Ancient Indian aeronautics. That's in English, and in Bengali, Prachin Bharate Biman Vidya. And so many books. But very recently, scholars have examined the manuscript of Samarangana Sutradhara, and they could notice that this book is not very old at all. There are interpolations made recent. I have to be very fair. What I know about the book, I just say to you, yes, nowadays, Samarangana Sutradhara is taken as somehow corrupted manuscript. It is not very old. Leave it. That does not matter. Anyway, I know one person. He is S.B. Bhave. He is a doctor, heart specialist of Pune. He had been. I do not know, still he is there. He is the greatest ornithologist, Pakshi Tattvavid
ornithologist of India and Pakistan, advisor to the presidents of India and Pakistan for aeronautics. He has an aircraft of his own. He owns an aircraft like our cars. And he was interested so much so about the descriptions in Meghaduta of Kalidasa that he visited all the spots and had documented from Ramagiri to Aloka. So these are the scientific temperaments in Sanskrit works that influence modern scientists as well. That's the point. On the science of jewels, works like Agostimoto, Ratna Pariksha, and others may be mentioned. Works on science, music, cooking, nothing is left. Works on phonology, the entire Sanskrit grammar, it's also scientific. Modern science progressing first towards computerization and Sanskrit sound system is regarded as the most helpful in this regard. The Indian philosophical system also do have scientific elements. It may be possible that science of aesthetics dealing with Rosho, etc., is also based on science. Days are not far away when it would be established that some type of chemical orientation done in brain. Very recently, only 2 days back, microglia has been discussed in science journals. And on that basis, I could say that it's not very far that it would be established that the science of aesthetics is also, maybe the spiritual science is also a science. Anyway, it's pity, in 1 minute, it's pity that many works of Sanskrit on science itself are lost forever, lost in oblivion. In most cases, not all castes and even not all of the same family were allowed to have training from the Guru. If knowledge is open to 1 or 2 sons only, then hardly society as a whole is benefited. I have experienced on my own eyes thousands of manuscripts, Sanskrit manuscripts, old Sanskrit manuscripts are thrown away in Ganges at Benares, Kashi. Because after the death of a Pandit, the family members do not want that these manuscripts go to his Gatikulas. Others should not be allowed. And my brother, I say, he is Brindavan Bihari Das, Katia Baba. Katia Baba was a small boy at the time. He was with me. We jumped from the boat and rescued about 1,000 manuscripts and deposited it Ratnakar Park, Katia Baba's ashram in Benares. This is the attitude of many Sanskrit Pandit family also, that they do not share knowledge. They do not like that it is divided, it goes to others. This is why many Sanskrit work is lost in oblivion. It is a fact. I have seen on my own eyes people selling manuscripts with scientific elements, even 5 years back, 4 years back, to foreigners
for a few dollars or euros. Manuscripts are being sold. So our knowledge is going away. We are selling it. We are not using it, or we are just giving it to a restricted one or two families. Yeah. So these are. Before coming to any conclusion about scientific elements in Sanskrit text, we should not go against the basic science. I have 2 minutes more. There is one Nyaya called Kakakshi Goloka Nyaya. The Kakakshi Goloka Nyaya is used in the works on grammar, used in the philosophical works, used in literature, so many times. The Sanskrit scholars believe that crow has one eyeball only, and there are two holes. So the eye movement in the socket, this way, that way, so it can see one side and the other side is blank. This has no scientific basis at all. I have dissected crow's head. I have gone through standard books on ornithology, Zardos, French, the French ornithologist, Selim Ali of India, and others. And in the zoology lab, dissected and saw that no, they have two eyeballs. But it goes on in Sanskrit as a science. This is not based on science. What makes is that there is a story in the Ramayana that Rama once targeted Jayanta, Indra's son, because of there's some story. Jayanta in the form of a crow scratched Sita, and then Rama targeted Jayanta, and as Rama's arrow cannot fail, so one part of Jayanta in the form of crow, his right eye was affected. And so from the Ramayana to the Purana, to Kalidasa Raghuvansha, the theme goes on, the crows do not have two eyeballs, only one eyeball. This is not based on science. So when we go for scientific elements in Sanskrit, we must be open, which is really based on science and which is only a myth. You may, I just go over there with this photograph. You see, crows have only 30-degree binocular vision. These are all monocular vision, and monocular vision does not give a perfect picture. So please accept what is really based on science and know what is not. With these few words, I think that it is 15th minute that I leave. Govindji, everyone, namaste, please, everybody. धन्यवाद महोदय। भवतां भाषणेन वयम् उपकृताः स्मः। संगोष्ठ्याः साररूपेण वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्मासु विराजन्ते सारस्वत अतिथयः डॉक्टर रघुनाथ नेपाल महोदयाः। अहं महोदयं प्रार्थयामि यत् भवतां वक्तव्यम् अत्र आगत्य उपस्थापयतु। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। दिशन्तु मे देव सदा दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः। श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुम्। अस्याः अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठ्याः प्रमुखातिथि महोदयाः, कुलपति महोदयाः इदानीं
कार्यवशात् बहिर्गताः। सोपस्थिताः आचार्याः सत्यनारायण चक्रवर्ती महाभागाः अस्यैव विश्वविद्यालयस्य अस्य संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर स्निग्धा दास राय महोदया एवं विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानाः डॉक्टर शंकर भट्टाचार्य महोदयाः, निर्देशक महोदयाः प्रोफेसर ए नटराज महाभागाः, अन्ये समुपस्थिताः विद्वांसः आचार्याः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर गोविंद शर्मा महोदयाः, कार्यक्रम संचालकाः मम मित्रवर्य आचार्य केशव लुजर महाभागाः, अत्र शोधपत्रं प्रस्तोतुं समागताः शोधार्थिनः विद्वांसः, अन्ये छात्राः छात्रो भगिन्यश्च। सर्वप्रथमं भवतः सर्वान् अहं हार्दं धन्यवादं व्याहरामि, यतोहि अत्र विश्वविद्यालयेन तत्रापि विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन अयं जनः बहुदूरात् समाहूतः। तदर्थं कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाय अत्र गोविंद शर्मा महोदयाय विशेषतः कार्तज्ञं व्याहरामि। संगोष्ठी इयम् अत्यन्तं सफला भविष्यति इति अहं मन्ये, यतोहि विदुषां भवतां सर्वेषां दर्शनेन अत्र सहैव उपवेशेन च महान् लाभः भवेत्, यतोहि बहुभिः विद्वद्भिः अनुसन्धाय अयं विषयः अत्र प्रस्तूयते इति अहं मन्ये, यतोहि विषयोऽयं संस्कृतवाङ्मये विज्ञानं प्रविधिश्च संस्कृतशास्त्रेषु संस्कृतवाङ्मये इति वक्तव्यं सामान्यतः विज्ञानं वर्तते। अतः अयं विषयः अस्माभिः भारतवर्षस्थैः सर्वैरपि चिन्तनीयः एव, यतोहि संस्कृतम् अस्माकं संस्कृतेर्मूलम् अस्ति। संस्कृतेनैव अस्माकं संस्कृतिः परिज्ञायते। यावत् संस्कृतं वयं न जानीमः तावत् पर्यन्तम् अस्माकं या संस्कृतिः वर्तते सा न सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। अतः सर्वेषाम् अपि विज्ञान विषयाणां बीजं संस्कृतशास्त्रं वक्तुं शक्यते। किंचित अहम हिंदी भाषायां वच्मि। वस्तुतः हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला आप जैसे सभी विद्वानों के साथ में यहाँ रहकर इस विषय पर परिचर्चा करने का। तो संस्कृत वाङ्मय में जो विज्ञान है, प्रविधि है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं ये 2 दिन के संगोष्ठी में। और हमको संक्षेप में आज यही कहना है कि संस्कृत संपूर्ण विज्ञानों का मूल स्रोत है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत में हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र संपूर्ण भाषा उनका जननी, व्याकरण को हम बोल सकते हैं व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, विशेषतः भारतवर्ष में जितने भी भाषाएं हैं उन सब की जननी है। तो उसमें जो है ध्वनि विज्ञान है, उसमें भाषा विज्ञान है,
उसी तरह से न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, विशेष करके काणाद का जो शास्त्र है वो पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। उसी तरह से सांख्य शास्त्र है जिसमें प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान, तो प्रकृति माने तो प्रकृति का ज्ञान माने इस बाह्य जगत का ज्ञान, ज्ञान है। योग शास्त्र हम योग चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं, चित्त के विषय में जानना समझना, तो मनोविज्ञान योग शास्त्र के अंदर में आ जाएगा। तो उसी तरह से हम वेदांत शास्त्र जिसका अध्यात्म विज्ञान, आत्मविज्ञान, हमारा जो वर्ष का सबसे महान विषय यही रहा है, जो आज तक बाहर जिसको अन्य दार्शनिकों ने अथवा अन्य जगह के विद्वानों ने जिनको नहीं समाया है, नहीं पहुंचा है, ऐसा विषय है हमारा वेदांत विज्ञान, वेदांत शास्त्र का आत्मविज्ञान। उसी तरह से लोक व्यवहार में जो अत्यंत प्रसिद्ध है आयुर्वेद का जो चिकित्सा विज्ञान, जो मानव सृष्टि के आरंभ से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति बताई गई है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र का खगोल विज्ञान है, स्थापत्य शास्त्र में जो वास्तु विज्ञान है, और उसी तरह से महाभारत पुराण आदियों में जो हमारे नीति, राजनीति, नीति, जो समाज व्यवहार का जो विज्ञान, वो सब बताया गया है। और आगम शास्त्र में शिल्प के विषय में बताया है। तो ऐसे अनंत विषय हैं, बहुत विषय हैं। उन सब विषयों का बीज हम संस्कृत वाङ्मय को, संस्कृत शास्त्रों को ले सकते हैं, पर इतनी ज्यादा आत्मरति भी नहीं करना चाहिए कि हम आज जिस युग में हैं, जिस तरह से वैज्ञानिकों ने, आधुनिक विज्ञानों ने इसकी उन्नति की है, वो उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते ही हैं और उनका आज हम सदुपयोग कर ही रहे हैं। संस्कृत भाषा का हम इस तरह से इसको देख सकते हैं या मान सकते हैं संस्कृत शास्त्रों का, कि जो भी बना है, जो आज विज्ञान की जो प्रगति हम देखते आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीज रूप में, मार्गदर्शन के रूप में संस्कृत वाङ्मय रहा है। इसमें किसी की वैमत्य नहीं हो सकते या कि किसी को जो है उसमें दो मत वो नहीं रख सकते, क्योंकि सभी विज्ञानों की मूल स्रोत या मूल जो है बीज हमको संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। तो हम आगे भी इस संगोष्ठी में जो शोध पत्रों के साथ में हम परिचर्चा करेंगे और मुख्य विषयों को गहराई में जाकर, तो इसके लिए हम फिर आगे का सत्र का जो है इंतजार करेंगे। और इसके लिए जो हमें जो है इस विश्वविद्यालय में आकर यहाँ पर अपना मंतव्य रखना और इस विषय पर परिचर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को, विशेष करके जो संस्कृत विभाग है उसमें भी संयोजक, योजकस्तत्र दुर्लभ, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे संयोजक जी और हमारे मित्र जो केशव मित्तल जी, आचार्य जी, जिन्होंने बाल्यकाल से ही हम सबको, हम साथ में रहकर अध्ययन किए, तो आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को यही विश्राम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतवर्षम, नमो नमः। धन्यवादः महोदयाः। अस्माकं संस्कृतवाङ्मये विज्ञानस्य बीजरूपेण तत्र वर्तते, विज्ञानस्य बहवः विषयाः तत्र वर्तन्ते इति भवद्भिः सूचितं। तत्र स्वल्पकालेन अतीव धन्यवादाः भवन्तः। इदानीम् अस्ति विशिष्टातिथिर्भाषणमस्ति। अत्र अस्मासु विराजन्ते संस्कृत भारती पूर्वोत्तर भारतस्य अध्यक्ष महोदयाः डॉक्टर शंकर भट्टाचार्य महोदयाः। अहं महोदय प्रार्थये यत् अत्र आगत्य अस्मान् भवतः वक्तव्येन यं वैदिकां तत्तिष्ठः पुराणम्
इंद्रं यमं मातरिष्वमानमाहु वेदं निर्वचनमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायनी संशिवै तोषं यं वैश्वमहाविश्वेति वन्ति ऊर्ध्वस्तभागं इति बोधयेनः तत्श्रीयकालयति कुमारः स्वामी मातेति येति भक्ता यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स्वैव प्रभृतियः चतुर्मुखं यः वनहं सबधुर्मं मासेयमकानीतं सरस्वती लोककीर्ता सम्मोहनं सुमधुरध्वनियुतं गृहे दूरभारति वाङ्मयम् अत्र मंचोपरि उपविष्टाः वाग्देवतः वरपुत्राः नेपालागतः रघुनाथ महाभाग मम प्रणम्य सत्यरंजन अध्यापक सत्यरंजन चक्रवर्ती महाभाग अत्र विश्वविद्यालय कुलपति राजीव मोहन पंथ महाभाग अपि समुपस्थित अस्ति अन्ये च ये खलु मम प्राचीन मित्र नटराज महाभाग गोविंद शर्मा जी मम स्नेहभाजना स्नेहास्पदा सिंगदा दासाय महाभाग तथा च अत्र उपविष्टाः सारस्वत समाजः विद्यार्थिनश्च सर्वेभ्यो मम स्वागतम् हार्दिकम् अभिनन्दनम् अद्य यं विषयम् अधिकृत्य आलोचना तद्विषये पूर्वमेव वक्तृद्वयेन विशदम् आलोचितम् अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृतेः धारका वाहका भाषा भारतस्य प्रतिष्ठते संस्कृतं संस्कृतिस्तथा अत्र खलु प्राचीन विश्वविद्यालय विशेष प्राचीनतम विश्वविद्यालय अस्मिन् देशे एव विराजमानः तक्षशिला विश्वविद्यालय यदा बहितः आक्रमणकारिणः आगताः तैः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ग्रन्थगाराणि विध्वस्तानि तत्र स्थितानि बहुशः लक्षशः ग्रन्थाः भस्मीकृतानि यथा श्री चक्रवर्ती महाभागेन उक्तम् आसीत् यत् अस्माकम् अन्धविश्वासकारेण ज्ञानस्य वितरण प्रयासे संकुचवशतः अपि ज्ञानस्य प्रसारः न अभवत् गङ्गासूतसी ग्रन्थाः विसर्जिताः तथा च पाश्चात्यदेशीय जर्मन फ्रांस आंग्ल पोर्तुगाल इत्यादि देशतः आगताः अनुसन्धित्सु जनाः ते स्वल्पमूल्यं प्रदाय एव ग्रन्थाः सङ्गृहीताः एवं अस्माकं विशाल ज्ञान भाण्डारं संकुचित अस्ति दुर्भाग्यवशात् अधुनापि ब्रिटिश शासन काले आंग्लानां शासन काले संस्कृत शिक्षाय यत् गुरुत्वम् आसीत् स्वाधीनता प्राप्तेः अनन्तरं
त्रिंशत् वर्ष पर्यन्तं यत् महत्त्वम् आसीत् तदपि अस्माकं नास्ति, तदपि यद्य नास्ति अस्माकं शिक्षा व्यवस्थायां नव न्यू एजुकेशन पॉलिसी नवीना शिक्षा नीति इत्यस्य स्तुतिः बहुभिः क्रियते, परन्तु भवन्तः सावधानं पृच्छता। तत्र संस्कृत भाषा विषये बहुविधानि प्रशस्त वाक्यानि सन्ति, परन्तु शिक्षा व्यवस्थायां संस्कृतस्य स्थानं किमस्ति निर्देशने किमपि न उक्तम्। यदि संस्कृत भाषा ऑप्शनल विषय रूपेण एव ऐच्छिक विषय विद्यालये अस्ति तर्हि तस्य पठन पाठने विद्यार्थिनां मनोयोगं कथं भवति? अतएव नवीन शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति इति वक्तुं वयम् असमर्थाः। यदा वयं विद्यालयस्य छात्राः आसन् तदापि सप्तमश्रेणीतः आरभ्य दशमश्रेणीपर्यन्तं संस्कृत भाषा आवश्यक विषय रूपेण पठिता। अस्माभिः अपि अवकाशः प्राप्तः। स्वाधीनता प्राप्ते 35 वर्षपर्यन्तम् एतादृशी व्यवस्था अस्ति। तदनन्तरं संस्कृत भाषा शिक्षायाः अवकाशः संकुचितः जातः। संस्कृत भारती सर्वकारस्य पृष्ठपोषकतां विना अपि समग्र देशे संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारकार्येषु नियोजिता भवति। अद्य अस्मिन् विषये आलोचना तद्विषये अपि संस्कृत भाषा बहुमूल्य ग्रन्थद्वयम् अस्ति। प्राइड ऑफ इंडिया आंग्ल भाषा विरचितं पुस्तकं प्राइड ऑफ इंडिया संस्कृत भाषी कार्यकर्ता भी संग्रहं क्रियते, तेभ्यः संग्रहं कर्तुं शक्यते। तथा च साइंस अन्यत् पुस्तकमस्ति। परन्तु संस्कृत भाषा Hello. Yeah, I have updated the DD tracker. Okay. Just now I sent the path to Pratisha Pathali. But here in our folder structure, we have the space in the detailed design reviews. Okay, so what she said is like yeah, so you can make it underscore. So do you know how to change this in the PTC? Like rename is there, but I am not getting that rename. समस्या एतादृशी अस्ति यत् वैज्ञानिकः संस्कृतं न जानाति, संस्कृत भाषां न जानन्ति, संस्कृत भाषा पंडिताः अपि विज्ञानं न जानन्ति। अतएव मेलबन्धनं ज्ञानस्य संयोगात् नवीनम् अन्वेषणं कथं सम्भवति? विज्ञान भारती नामधेया संस्था अस्ति। अहं न जानामि अत्र विज्ञान भारती कोऽपि कार्यक्रमः उपस्थितः अस्ति न वा। असम विश्वविद्यालये अपि लाइफ साइंस विभागस्य अध्यापकः मानवेन्द्र दत्तचौधरी इति नाम सम्भवतः। तो विज्ञान भारती दायित्वप्राप्तः अस्ति। अतएव विज्ञान भारती किञ्चित् चेष्टां करोति, काचित् चेष्टां करोति। अद्यतने समावेशे तेषाम् उपस्थितिः अपेक्षिता आसीत्, परन्तु एतादृश प्रयासः चलति। अतः अहं
पुस्तकद्वयस्य नामम् उक्ता एतद्विषये बहु आलोचना भवितुं शक्यन्ते पुस्तकद्वय नाम्नः अहं वदिष्यामि प्राचीन भारतीय सभ्यतार इतिहास बंगभाषा बहुमूल्य ग्रंथ डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष स्वातंत्र्य प्राप्तानन्तरं जो पश्चिम बंगस्य प्रथम मुख्यमंत्री आसीत् अन्य तो प्राचीन भारतीय सभ्यता इतिहास ग्रस्त प्रख्यात विज्ञानी लिखित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आंग्ल भाषा विरचित पुस्तक केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया अरे मम निवेदन अस्माकं सर्वेषां पक्षतः भारत सर्वकारं प्रति विद्यालय पाठ्यक्रमे यदि संस्कृत पठनस्य वर्षत्रयं भवतु वर्षचतुष्टयं वा भवतु तावत्कालं यदि संस्कृत भाषा पठन पाठनस्य व्यवस्था न क्रियते तर्हि नवीना शिक्षा नीति प्रकृततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति वक्तुं न शक्यते। समय यापन सम्भवतः अतिक्रान्तमेव अतएव सर्वेभ्यो भवेभ्यो मम श्रद्धासुमनानि अर्पन्ते आयन्तु साधवः सर्वे दिग्विदिग्भ्यो निरन्तरं संस्कृत भाषामाश्रित्य कुर्वन्तु विश्वमङ्गलम् इति प्रार्थना। धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्माकम् ऑनलाइन माध्यमेन विशिष्ट अतिथयः सन्ति श्रीलङ्कातः। ते अत्र नागताः परन्तु ऑनलाइन माध्यमेनैव तेषाम् अत्र वक्तव्यं भविष्यति। तेषां नाम अस्ति जम्बुघपिटिये धम्मालोक। ऑनलाइन माध्यमेन श्रीलङ्कातः इदानीं तेषां वक्तव्यं भवति। Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Professor Rajiv Mohan Pant, the Vice Chancellor of the Assam University, the keynote speaker, Professor Atyanarayan Chakraborty, retired Professor of the Rabindra Bharati University, Kolkata, Professor Snigdha Das Roy, Head of the Department of Sanskrit, University of Assam, guests of honor in the session, Dr. Raghunath Nepal from the Nepal Sanskrit University, and Dr. Sankat Bhattacharya from the Sanskrit Bharati Purvottar Bharat, Professor Nataraju, Director for the Center for Indian Knowledge Systems, Dr. Govind Sharma, the coordinator of the seminar, distinguished professors, scholars, and ladies and gentlemen. I feel very honored and privileged to be invited to the inaugural session of this outstanding event organized by the Department of Sanskrit of the University of Assam, Silchar. Needless to say, organizing this type of event is not an easy task. It requires a lot of dedication, courage, labor, human resources, especially expertise, time, funds, and many other things. As mentioned by the previous speakers, and as all we know, this international seminar on science and technology in Sanskrit texts is organized by the Department of Sanskrit of the University of Assam in collaboration with Sanskrit Bharati Purvottar Bharat, and it's sponsored by the Center for Indian Knowledge Systems, IKS, of the Assam University and the Northeast India Company. The fact that I am addressing you all at this inaugural session means the organizers of this academic event had and have all those requirements fulfilled, and more importantly, a right vision and actionable plan. They led them to this successful occasion. Therefore, I would like to convey my pleasure and heartfelt appreciation to them. I would also like to thank to the Vice Chancellor of the Assam University, Professor Rajiv Mohan Pant, Professor Snigdha Das Roy, Head of the Department of Sanskrit, Dr. Govind Sharma, Associate Professor in Sanskrit, who is the coordinator of this seminar,
and the organizing committee for inviting me to this event and giving me this opportunity to address the gathering. Scientific and technological literature is one genre of the vast literature in Sanskrit, which is the storehouse of the ancient Indian knowledge produced by the great thinkers, intellectuals, and scientists of the land. It is also pleasing to see the increase in interest in this genre from recent past among Sanskritists, Indologists, and many other relevant bodies and institutions all over the world. Currently, number of scholars work on this field, and the number is rapidly increasing. We cannot undermine the importance of scientific background of the researcher working on these texts, but what is indispensable is a sound knowledge of Sanskrit language, the medium in which it is codified. As we all know, the literature on science and technology in Sanskrit is not the only place where we find these scientific ideas and knowledge of ancient Indians. The scientific ideas and knowledge invented by great Indian scholars, our gurus, are scattered in other literary genres as well. They are hidden in poetries, as mentioned by previous speakers, Puranas, some other religious texts like Dharmashastras, and all the other places, all the other literatures as well. All of those ideas might not be valid for today if they are applied in their present form, but what is valid about them is the line of thinking through which ancient gurus produced that knowledge. That is what we need to understand and should promote. The intriguing characteristic is that, unlike the modern scientific literature and the literature on sciences in other cultures, the Sanskrit literature on sciences in India is not just about the theories, numbers, symbols, instructions, and complex rules and operations. It is always amalgamated with poetic features, flavor of arts, and ethics. There are many hundreds of scientific texts written in India, and most of them are still in the form of manuscripts in manuscript repositories and collections. They should be edited, studied, and published. Though they all represent the same tradition, researchers should keep in their mind that there are subtle nuances in each and every text within the tradition. For instance, great mathematician, astronomer Ganesha Daivagnya states in his commentary on the Leelavati that though the Magadha Karika is a standard unit of volume, there had been different versions of it in different localities. Each and every author has his own voice in their texts. Therefore, we should not conflate all the knowledge together, neglecting their identities. At the same time, we should not exaggerate the value of them as well. I think it is a pleasure to those who are interested in Indian knowledge systems and Indian heritage to see how this invaluable intellectual tradition is now being promoted by many experts and academic bodies. There are many universities, centers, and institutions involved in this, and it is a commendable task. Recently, IIT Kharagpur organized a workshop for promoting the learning research in IKS. And this international seminar organized by the Department of Sanskrit Assam University is also in the line with same aim. I'm pleased to inform that the Department of Classical Languages of our university, Sri Lanka, where I currently work as a faculty, has been offering some courses related to IKS for many years, and recently we started offering a course on Sanskrit works on arts, crafts, and sciences in postgraduate level as well. I hope we all are now moving to the right direction. So with those words, I would like to conclude my short speech. I wish you all the best for all the endeavors in promoting Indian knowledge systems in particular and the Indian heritage in general. Thank you very much.
नेपाल महाभागाः शंकर भट्टाचार्य महाभागाः चक्रवर्ती सर नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतं भारतीय परंपरा संपोषण केंद्रतः संस्कृतं भारते ज्ञानस्य भाण्डागारं भाण्डागृहम् अस्ति. It has been the case that all knowledge traditions are Sanskrit language is a repository in ancient times, and Samskrite eva bahavaha darshanika shastra grantha santi apitu vaignanika vishaye api prachina bharate sanskritam eva Samskrite eva likitavantah. There is no second thought that philosophical and religious traditions are in Sanskrit, including the Brahma Sutra and the Bhashyas of Acharya, Shankara, Ramanuja, Bhaskara, and others. For philosophy, Sanskrit is the language to go to, and without that knowledge, we don't do Indian philosophy, at least. It's not possible. But there is also no denying the fact that several scientific and technological advancements were also part of Sanskrit texts. And there is a de-link between the past and the present. And the big question to be answered, the challenge for all Sanskritists is, where has that brilliance gone? What has happened to that genius mind? What has happened to innovations? What has happened to creativity? What has happened to the history of this nation? Where is that genius? With so many innovations, the names, you take the names of the Aryabhattas and then the Bhaskaras and then Brahmagupta. What has happened to Indian mind is a big challenge for all of us. One example which, fortunately, I come from a Sanskritist family, grew up in a Vedic school, so it was all Sanskrit atmosphere. Everybody speaking in Sanskrit and conversations were all in Sanskrit. But I had more interest in physics and mathematics, so I was away from these people. I used to think that there is absence of that scientific spirit. The talk is mostly gravitating towards a pseudoscience. This was an understanding that I used to have. Pseudoscience is not science. Science depends on proof mechanism. Science depends on facticity. Science depends on hard facts and experimentation, which the science we claim is lacking. That's not a correct position. That's my later correction. So the science that is present in the ancient texts meets all the parameters of what you define as science with all the proof mechanism, etc. But the challenge is, as I said, where is that brilliance? What has happened? One good example I generally remember is zinc distillation. Zinc asavanam bharate prachina kaladeva prasiddham asan Europe deshaha adhuna eva etat janat. Zinc distillation was known for us very long time. That's supposed to be the toughest distillation process. But the point is, what has happened in the Middle Ages? There is a huge gap now. There is a huge gap to be filled up, and we cannot. Chakravarti sir was indirectly mentioning that we cannot rest upon what has happened a few thousand years ago. That can inspire us. That should make us work more. And the future and the present are more important for all of us. The present is important. The future is important. So, say for example, what I meant by that is, one more minute, coordinator. What I meant by that is, we have, say, yoga and meditation and dhyana paddhatis. That's the Indian mind. We have several models of meditation, several models of pranayama. See how an American mind works is, we don't have the data collected. I have not seen an Indian yoga practitioners or dhyana teachers having the data to show what is the state of the mind before meditation, what is the state of mind after meditation. This I was pleasantly surprised when I was at Fairfield Maharshi University of Management. I mean, they've got all kinds of machines there. The ECG, EEG, and then they put the those electrodes onto the head,
and data collected over years, on 100 people, on those who are not meditating and on those who are meditating. And the last 5 years data, and they present the data so beautifully. They tell you the alpha, beta, gamma, these are the wave functions of the brain, the nanoparticles of the brain. This is the function. Look at this function and how it gets stabilized. The gamma wave gets stabilized. That's what science is all about. The science is about observation, about experimentation, about the proof mechanism, and our ability to actually show, the world that something can be repeated given the, same set of circumstances. That kind of an approach, where we come up. We do have so many methods, we do have so many models, but there is a gap. There is a gap that we needed to answer. And they come up with all the data, this much data to show that, look, you meditate for 2 years and this is the change in the brain mechanism. This is how the nanoparticles of your brain start to function. There is more harmony, there is more energy, and that's more, more, it makes us convincing. So the science has its own way of, experimenting, observing, and coming up with the data. But the science of the Aryabhattas and Bhaskaras unquestionably was as pure a science as it was. As I said, there is a missing link. We need to pick it up. Where is that innovative brain? Where is that creative genius? What has happened to this Indian mind? So many hundreds of years of foreign rule. Is that the case? So many hundreds of British rule. Is that the case? Where is that dullness that has come to the Indian mind, which was, which calls itself as a Vishwaguru? But to substantiate it, again, there is a need to revisit. But the old texts and the old science models can only inspire us. But it's for all these younger generation to retake up more new research, more works to be done for the good of the future. That's how I look at all the science and technology present in the text. No doubt, Sanskrit has been the repository. And several years, it has been my reflection that Sanskrit should have been national language of India. All controversy could have been avoided. My father used to continuously say Sanskrit should have been national language. And if you know the language committee and the reports, it is Dr. Ambedkar who proposed Sanskrit as a national language. And then there was other discussion and other factors have come in because that's the language which is the basis of all the other languages as well. All the other languages have their roots to Sanskrit, except Tamilians claim that they have some independent Dravidian format, though they have 40% of the words that are Sanskrit. So it's time we again relook at the Sanskrit text, and in philosophy departments, we do conduct a diploma Sanskrit spoken courses long back. We did that. We again want to do. Indian philosophy cannot be done without Sanskrit knowledge. We just can't do. Bharatiya Darshana Shastra cannot be done without Sanskrit knowledge. And those interested in science and technology also, there are several universities, leading American universities, they're doing wonderful job on Indian texts. On Indian texts, they do extremely good job. And that's pretty inspiring for all of us. So with these few words, because I'm given only 5 minutes, and whatever paper that I have on ethics, religion, and science and interface, those things I will share when I'm chairing the session. I have a paper for myself, so that I will do later on. So Jayatu Sanskritam, Jayatu Bharatam, Dhanyavadah, Namo. धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्माकम् अत्र विराजन्ते मञ्चे विराजन्ते असम विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यः प्रोफेसर राजीव मोहन पन्तमः भागः। अहं तान् अनुरोधे यत् भवतां भाषणेन अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। आदरणीय प्रोफेसर स्निग्धा जी, श्रद्धेय नेपाल जी, श्रद्धेय प्रोफेसर चक्रवर्ती जी, प्रोफेसर भट्टाचार्य जी महोदय, प्रोफेसर नटराजू जी, गोविंद जी,
यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये बहुत ही सुखद अवसर है मेरे लिए कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषण केंद्र द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है इसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला, और मैं इसके लिए इस केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और साथ ही मैं संस्कृत विभाग का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया। संस्कृत ईश्वरीय भाषा है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो ऐसी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए, और ऐसी भाषा के लिए विश्वविद्यालय जैसे स्थलों में इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें सजग रहना चाहिए, और ये इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान आज हमारे मध्य हैं, माननीय चक्रवर्ती जी, भट्टाचार्य साहब, नेपाल जी, स्निग्धा जी, सभी इतने विद्वान लोग इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं। तो इतने सब विद्वानों के समक्ष मैं संस्कृत के योगदान पे बोलने के लिए अपने को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि भारतीय हूँ, भारतीय परंपरा से जुड़े रहे हैं, भारत मेरे रक्त में बसा हुआ है, तो संस्कृत को हमने जिया है। ये हमें पूरी तरह से विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी, एक लंबे गुलामी के कारण हमें पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी, और अभी तक ये प्रयास जारी था कुछ वर्ष पूर्व तक कि संस्कृत एक मृत भाषा है, पर जो भी चीज दैवीय है, जो भी चीज ईश्वरीय है, वो कभी मृत तो हो ही नहीं सकती। और जब मैं इसलिए मैं संस्कृत विभाग में हमारे विश्वविद्यालय के बार बार जाता हूँ, और वहां जाके मुझे बार बार ये चीज जागृत होती है कि संस्कृत हमारी बहुत ही अभी भी सुदृढ़ भाषा है। और जैसा कि डॉक्टर महोदय ने बोला कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और संस्कृत को हम राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहेंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जो कि मृत भाषा जिसको कहते थे, और आज वो भाषा हम सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, और वो सुन के एकदम बिल्कुल अमृतत्व मिलता है। मैं कहूँ संस्कृत में साइंस विज्ञान या इसके बारे में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। मैं अर्थशास्त्र और प्रबंधन का छात्र रहा हूँ। अर्थशास्त्र के विद्वान सुमानव जी यहाँ बैठे हैं। 1773 में एडम स्मिथ ने जब पॉलिटिकल इकोनॉमी की किताब लिखी थी, यदि हम उसी चीज को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शायद पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए क्वालिफाई, मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिकल इकोनॉमी की प्रारंभ वहीं से हुआ। कौटिल्य से कैसे राज्य को चलाना है, कैसे अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करके राज्य को आगे बढ़ाना है, वो सारी चीज हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। यदि मैं प्रबंधन की बात करूं तो हमने पीटर ड्रकर को पढ़ा, हमने फिलिप कोटलर को पढ़ा, पर मैंने उन्हीं को पढ़ के प्रबंधन का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। पर जब बाद में जब हमने देखा कि वो सारी चीजें तो हमें गीता में बहुत सब कुछ, चाहे वो टीम बिल्डिंग की हो, चाहे स्ट्रेटेजी की बात हो या सिनर्जी की बात हो, तो सब हम गीता में ये सारी चीजें उपलब्ध है। न्यायावली से आप कौन सी चीज ऐसी है जहाँ पे कि कौन सा मैनेजमेंट का सामने बहन बैठे हैं, ये प्रबंधन से ही हैं, कौन सा प्रबंधन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि न्यायावली से हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमारे संस्कृत में और हमारी संस्कृति में रची बसी है, जिनको कि आज हम जब हम गुलामी की बेड़ियों को थोड़ा तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तब हमें लग रहा है कि संस्कृत तो सब कुछ है। विज्ञान की बात करें तो चरक संहिता, सुश्रुत, या खगोलीय शास्त्र की बात करें तो गणित की बात करें तो इवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि दशमलव के 14 अंकों तक हम लोग ऐसे ही वैदिक गणित के माध्यम से हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। हमारा गणित इतना आगे बढ़ा हुआ था। खगोलीय विद्या में भारत पूरा मैं कहूँगा कि हमारी एक मोनोपोली थी। जब
दुनिया में बाकी देशों के लोगों को अपने तन ढकने की भी शायद ये प्रतिभा नहीं थी। उस समय हम खगोलीय उसमें हम ग्रहों की चालों के बारे में बात करते थे। हम कुंभ मेला क्या है, नटराजू महोदय ने बोला कि सर साइंस क्या है, फैक्ट्स को प्रेजेंट कर, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की बेस में बात करना। जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या फैक्ट है, जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं, सोलर और लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है, ये सब चीजें सपोर्टेड थी फैक्ट से। और तभी तक और आज तक उन चीजों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। सवाल केवल यही हुआ कि हम लोगों ने जो लंबी गुलामी के समय में हमारी परंपराओं को ध्वस्त करने का जो प्रयास, मैं कहूँगा बहुत सफल प्रयास हुआ, और हम लोग खुद उसको हम भूल गए और हम मानने लगे कि संस्कृत जो है या भारतीय विज्ञान जो है अनसाइंटिफिक है, हमारी केवल यूटोपियन थिंकिंग है। पर अब जब प्रयास हो रहे हैं, मैं अभी जो मुझे पुस्तक मिली है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही इस तरह के प्रकाशन होने चाहिए ताकि हमें अपने संस्कृत और संस्कृति दोनों पर एक कॉन्फिडेंस आए। नई शिक्षा नीति इस मामले में एक बहुत ही प्रभावी कदम है कि हम अपने अपने संस्कृति पर एक बार फिर से भरोसा कर सके, आत्मविश्वास हमारा जगे उसमें, और हम ये माने कि जो हमें आज तक जो हमने शिक्षा जो ली है, जिसको कि हमने अपने अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को हमने मैक्स मुलर के चश्मे से देखा या पश्चिम के विद्वानों के चश्मे से देखा, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप आत्ममंथन करना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ है, उसका सही से अध्ययन करना पड़ेगा, तो हमें सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। हम बोल पाएंगे कि जो हमारा संस्कृत में जो ज्ञान छुपा हुआ है वो पूरा फैक्ट्स पर आधारित है। इसलिए आवश्यकता है कि एक नया प्रयास करने की। संस्कृत ये जो ये अभी एक आंदोलन चला है कि जब हम पूरे देश में जब नया सेंसस होगा तो उसमें कौन सी भाषाएं आप जानते हैं, तो उसमें हम सभी ये भी लिखें कि संस्कृत हम सब बोलते या जानते हैं। हाँ, हमारी सीमाएं हो सकती हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी संस्कृत भाषा के ज्ञान की सीमाएं हैं, हर एक ज्ञान की कुछ कुछ सीमाएं होती हैं, पर फिर भी संस्कृत हमारे अंदर इतनी रची बसी है कि जब मैं सवेरे उठता हूँ, सबसे पहले जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता या हिंदी में बात नहीं करता, सबसे पहले मैं संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता हूँ। ये सभी भारतीयों के साथ यही सत्य है, भारत का यही सत्य है। तो आवश्यकता है कि एक बार हम पुनः अपने को समर्पित करें इस देवीय ईश्वरीय भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, तभी हमारे देश का उद्धार होगा, और जो हमें विश्व गुरु की जो हमारी जो प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा पर हम फिर हम उसी स्तर पर अपने भारत को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषण केंद्र को, जो कि इस तरह के कार्यक्रम बहुत कर रहे हैं और इससे ये बहुत ही दूरगामी परिणाम इनके होंगे, ये मैं मानता हूँ। नटराजू जी और पूरी दल को मेरा साधुवाद। संस्कृत विभाग को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विद्वानों को जो कि इतना दूर से आए, अपना समय निकाला, और हमारे जो श्रीलंका से भी जो हमारे साथ जुड़े विद्वान धम्मलोक जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के सफल होने की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार और सबको धन्यवाद। धन्यवाद महोदयाः। भवतां भाषणेन वयम् उपकृताः स्मः। सम्प्रति अस्ति धन्यवादज्ञापनं। धन्यवादज्ञापनार्थम् अहम् अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकः डॉक्टर गोविंद शर्मा महाभागम् अहम् अनुरोधं करोमि।
सर्वादौ अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणां कृते अस्माकं आचार्यः राजीव मोहन पंत महाभागानां कृते अहं हार्दिकं कार्तज्ञं धन्यवादं विज्ञापयामि यत् स्वकीय व्यस्तकार्यक्रमादपि सः अस्मिन् उद्घाटनसत्रे सः आगतवन्तः तेषां कृते बहुवारं तत्र हार्दिकं कार्तज्ञं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकं एतत् सत्रस्य बीजवक्ता प्रोफेसर सत्यनारायण चक्रवर्ती महाभागः यः पूर्वमपि 30 दिनाङ्के सः सिलचरे आसन्। एकवारं तत्र वार्तां कृत्वा एव सः अनुमतिः सः दत्तवान्। बहु व्यस्त स्वकीय व्यस्त कार्यक्रमादपि सः अस्माकं कृते सः समयः निष्कासितवन्तः तेषां कृते हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। विभागपक्षतः अस्माकं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयतः आगतः नेपालदेशीयः डॉक्टर रघुनाथ नेपाल महाभागः तं प्रति अपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्कृत भारती पूर्वोत्तर भारत न्यासस्य अध्यक्षः डॉक्टर शंकर भट्टाचार्य महाभागः अत्र विराजमानाः सन्ति तेषां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषण केन्द्रस्य निर्देशकः प्रोफेसर ए नटराजु महाभागः विराजमानाः सन्ति। तेषां केन्द्रस्यैव वित्तसहयोगेन इयं संगोष्ठी जायमाना विद्यते तेषां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकं विभागाध्यक्षः प्रोफेसर स्निग्धादासराय महाभागः सन्ति विराजमानाः तां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्ये च विभागीयः आचार्याः प्रोफेसर शांति पोखरियाल महाभागः प्रोफेसर भगीरथी विश्वास महाभागः तां प्रति हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। श्रीलंकातः यूनिवर्सिटी ऑफ नवोदयतः अद्य विराजमानाः सन्ति ऑनलाइन माध्यमेन आभाषीय माध्यमेन प्रोफेसर डॉक्टर धम्मलोका महाभागः तां प्रति अपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्येभ्यः विभागेभ्यः विराजमानाः डॉक्टर कृष्णमोहन झा महाभागः अन्येपि तत्र विभिन्नेभ्यः विभागेभ्यः विराजमानाः आचार्याः सन्ति तेषां समेषां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। असम विश्वविद्यालयस्य महाविद्यालयः ये सन्ति तेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः आगतेभ्यः शिक्षकेभ्यः छात्रेभ्यः तेभ्यः प्रति हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकं शोधछात्राः छात्राः ये च उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां कृते अपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्ये च तत्र कार्यालये तत्र कुलसचिवः सन्ति ते एव अयं सभागारः दत्तवन्तः कार्यक्रमाय तं प्रति अपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमस्य परिचालनार्थं श्री केशव लिटिल महाभागं प्रति हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। सर्वेभ्यः बहु धन्यवादः बहु नमस्कारः। इदानीं सभाध्यक्षम् अनुमतिं गृहीत्वा सभा समाप्ति उद्घाटन सत्रस्य समाप्ति इत्यैव जायते। बहु धन्यवादः। So our next technical session will be held in the Department of Hindi and the Department of Philosophy. As यहाँ पे थोड़ी देर में कुछ एक वर्कशॉप का कार्यशाला भविष्य एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी का है। पहले ये आज पूरे दिन का बुकिंग संस्कृत विभाग का था लेकिन उस वर्कशॉप के कारण हमें ये स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो next session will be held in the Department of Hindi. So all of you are requested to kindly join us in the department in the seminar hall of Department of Hindi. Thank you.